सो ये हो गया लाइफस्टाइल। एनवायरनमेंट में भी वही चीजें हो गई। बट सी, अगर आपको अंधेरा पसंद है तो ठीक है, इफ यू लाइक द डार्क दैट्स फाइन। अगर आपको अंधेरे से लगता है कि आपके मूड स्विंग्स बढ़ रहे हैं, तो अंधेरे से बच के रहें। यू स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन योर हाउस। This is light therapy is a treatment also for depression. You don't have to take medicines. Let's talk about nutrition. And when we talk of nutrition, we'll take hot flashes also. तो एक क्वेश्चन है कि why are hot flashes occurring earlier also at age 35, 36? And what can I do to minimize hot flashes, especially nutritional front पे? So hot flashes are basically vasomotor symptoms. Vasomotor as in हमारे जो vessels हैं, जो blood vessels हैं, जो dilate हो जाते हैं because of these hormonal changes. You have these hot flashes. You have night sweats. You could get it earlier on also when you're having, as we were discussing, कि menstruation के समय भी you have these hormonal ups and downs. So some people do get these hot flashes, very minimal, but these become very pronounced in some females. They are एब्सोल्युटली फ्लैबीगैस्टेड क्योंकि सबको जैसे अभी वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि अभी जैसे सर्दी है दिल्ली में, बट जिनको अभी मेनोपॉजल सिम्टम्स है उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वो एसी ऑन करे, वो फैन ऑफ ऑन करे और कुछ देर चलाया, फिर उनको अभी ठंड लगने लगी, फिर उन्होंने वापस से बंद कर दिया. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कंटिन्यू क्योंकि उनको this hot flash is a very very disturbing thing, and it's usually over the face area, the neck area, and particularly when somebody is working. I've had my senior doctor, colleagues tell me that, I've been seeing patients and achanak say hot flash aa gaya. And then I don't know what to do. I'm pausing for 1 or 2 minutes because I'm unable to talk properly. So, and anybody who's working, who's at home, this can be a little bit of a problem. Not little bit, it can be quite a problem. So, nutritionally, if we say, what can we do to help? There is a substance which is known as isoflavone. Isoflavone is something which helps with these vasomotor symptoms. So कुछ कुछ खाने हैं ऐसे जिसमें isoflavones naturally रहते हैं, like soya products. If you're having soybean oil, and tofu, anything that is made of soya, these contain isoflavones. There are also other lentils, beans, etc. जिसमें isoflavones रहते हैं. आप जरा नेट में सर्च कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि isoflavone वाले खाने कौन से हैं. So you can include that unless you are a hypothyroid patient. जब हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि आप आइसोफ्लेवोन जरा अवॉइड करें. एक्सेप्टिंग फॉर हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स, अदर्स अपने खाने में आइसोफ्लेवोन्स इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनके वेसोमोटर सिम्टम्स में थोड़ी सी you get some benefits out of there. Again and again, I'll be stressing on hydration. Get good amount of hydration. Hydration really, if you're dehydrated, you'll see that your vasomotor symptoms are increasing. At the end of the day, आपने बहुत ज़्यादा मतलब चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, ज़्यादा caffeine, strong stimulants, avoid these. Rather, maybe you can have something, a fresh lime juice. You can have something which is fresh, which gives you a lot of fluids, unless you have a contraindication कि कोई problem है जिसके कारण से आपको फ्लूइड ज़्यादा नहीं लेना है, कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया या किडनी वाला प्रॉब्लम है, वो तो अलग चीज़ हो गया. बट अदरवाइज गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स. As we discussed earlier, fruits, vegetables. Do not take a lot of carbohydrates. Generally, if you're taking, हमारे में sir, Bengalis में भी तो we have, generally people have rice 3 times a day. So it's like It's सुबह the breakfast. tastiest food in the world.